and today we are heading towards a place called Borotis Bill. Okay, so it is in Neelganj, which is in Kolkata itself, and the distance is very nearby, only 50 kilometers. Newton, Shontu, and the famous Bishambor. So so this is Newton's new, what is that? Notro 125. Woo! This is our Kolkata's clock tower. The place where we are going today, Borotis Bill, it is basically a sort of little lake. So today we have a new member, that is Sontu's friend, and we आराम से जा रहे हैं, ज़्यादा दूर है नहीं. So it's only 10 kilometers left over. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस लगभग 2 किलोमीटर बचा हुआ है. आई होप आपको समझ में आता ही होगा रास्ता देख के कि कुछ अलग ही टाइप का रास्ता है. बिकॉज आज तो ज़्यादा दूर है नहीं, 50 किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर बचा हुआ था, तो व्यू अच्छा लगा. Live behind the scenes once again Bishambor, the famous photographer and famous model. आज ज़्यादा रश है नहीं, then I'm feeling so relaxed. I just cannot explain, because I don't have the feeling कि आज मेरे को बहुत दूर बाइक चलाते हुए जाना है and टाइम नहीं मिलेगा. So finally, I hope पहुंच गए हम लोग. So finally, जो डेस्टिनेशन था Borotis Bill, पहुंच गए हैं. You can see the view now. Don't have any other activities to do other than ये नाव होगा if you want to go for a quick ride. तो अभी we are planning for that little boat ride. ठीक है, Bishambor हम जाओ ना. Bishambor नहीं जाएगा, उसको तैरना नहीं आता है, उसको तैरना नहीं आता है, तो तैरना मेरे को भी नहीं आता है भाई. इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो we are going to be one couple, Nance and Yash. Another one. ये दोनों जाने वाले हैं. दोनों में से संतु वो बोल रहा हाय. हम लोग नाव पे चढ़ गए, बट 2 जन हैं हमारे में से जो कि बहुत डरा हुआ है.
बोरोतिस बिल आते हो, then I would suggest like the nearby surrounding are really beautiful. However, I would say go ahead and ride this boat. बहुत अलग से experience आएगा, because आप जब बाहर रहते हो ना, you don't get to see whatever we see from this side. দেখ একে এমনি গরমে একটু টাকা Oh, beautiful Sontu. This is just 50 kilometers and it's just really a very nice experience. आप यहाँ पर आओ and then you go for the boat ride which we went. अभी हम लोग आए हुए सूरज एकदम ऊपर में है, ठीक है ना, तो बहुत हीट हो जाता है. तो मैंने वो नाव वाले से पूछा, उन्होंने बोला कि the best time is to come around 3 o'clock in the evening or after 2 o'clock when the sun is actually setting down. तो वो हीट थोड़ा सा कम हो जाता है ना, then you can see the sky nicely and you will feel that ambience, you know. It's very nice experience. और इन लोग चार्ज करते हैं 100 rupees per person, not 100 rupees the boat. ठीक है. I would request if you want to see the photos, go ahead and follow me on Instagram, The Marine Biker. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And let's see, we are planning for another motorcycle ride and I will be updating you guys soon.